Okay. So right now, we are not going to do the prayer first. You know why? Because I want you to do some experiments, and I want you to do some scanning. मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ स्कैनिंग करो, बाद में हम प्रेयर करते हैं, बाद में हम स्टार्ट करते हैं. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, let's do some quick exercises, to do the scanning. So finger stretch. Very good. Rotate your wrist. Reverse. Okay, elbows. Okay, shoulder. Okay, reverse. Very good. Neck. Very good. Now press the center of the palm. Center of the palm. Put them facing each other. It's like 5 to 6 inches away from the chest, and your from the shoulder also. It shouldn't be tight. Shoulders एकदम relax होना चाहिए, tight नहीं होना चाहिए. And facing each other 5 to 6 inches, not wider. Only 5 to 6 inches. सिर्फ 5 से 6 इंच दूर होने चाहिए, ज्यादा दूर मत रखो. Connect the tongue to the palate. जिभ तालू पर. Very good. Inhale slowly. Concentrate on the center of your palms. Hold. Exhale. Keep focusing on the center of your palms. दोनों हथेली के मध्य में आप फोकस करते रहिए और गहरी सांस लीजिए. रोकिए, सांस छोड़िए. Continue. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Continue for 5 breathing cycles more. Inhale. Hold. Exhale. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Hold. Exhale. Hold. Inhale. Okay, that's it. Okay. Now please scan. You scan. Either you visualize yourself maybe 1 or 2 meters away from you. आप अपने आप को विजुलाइज करो कि आप अपने से डिस्टेंटली 1 से 2 मीटर दूरी पर हो. Okay. And then you scan energy of divine light in you, means you, in me. You have to say that. Energy of divine intelligence or divine light, scan. Divine love and divine power. 3 energies. Or you can scan like this. You can put your hand like this, both the hands, and scan energy of divine intelligence in me, divine love in me, and divine power in me. So you can get the energy between your 2 palms. You check. आपको ये convenient है, ये क्या convenient है. You check. According to your convenience, you do it. Energy of divine intelligence in me, energy of divine love in me, divine power in me. मेरे अंदर दिव्य ज्ञान की शक्ति, दिव्य ज्ञान की एनर्जी कितनी है, दिव्य प्रेम की एनर्जी कितनी है, और
दिव्य शक्ति की ऊर्जा कितनी है? चेक चेक चेक. Done? Okay. So, did you notice the energy of divine intelligence, divine love, divine power? तीनों एनर्जी की जो लेवल है, it's not balance. It is one is more, like that, or one is less, or two more, two less, something like that. आपने देखा होगा स्कैन करके, एक एनर्जी ज्यादा है, एक एनर्जी कम है. Have you experienced that? Yes, it's not balanced. It's not same all the three energies. Yes, no. ओके. सो जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया, या तो आपको स्कैनिंग में एनर्जी मिला नहीं है, या आपके तीनों एनर्जी बैलेंस है. लॉर्ड ब्रह्मा शिवा विष्णु आपके अंदर आ चुके हैं. धनबाग हमारे जो अरिहंत हमारे सेशन में पधारे. क्लियर? या सबके हाथ ऊपर आने लगे. यस और नो? कम ऑन, आंसर. आई मीन, फिजिकल क्लास में होते तो आप क्या करते? जवाब नहीं देते, हाथ ऊपर कर देते. तो यहाँ भी आंसर देना है. व्हाई यू आर सो फैंटास्टिक. थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. तो अच्छा लगता है ना जब आंसर देते. मुझे लगता है ऐसे आप लोग सो नहीं रहे हो, आप लोग जाग रहे हो खाना खा के. ब्लू ट्रायंगल सोने के लिए नहीं बनाया हमने, खाने के लिए नहीं बनाया. क्या? नाउ लेट्स सी द डिफरेंस. अभी हम देखेंगे कि क्या फर्क होता है. ओके. नाउ पुट योर हैंड्स ऑन द हार्ट चक्र, नमस्ते मुद्रा. कनेक्ट द टंग टू द पैलेट, जीभ तालू पर. ओके. यू डोंट नीड टू लोअर योर हैंड. ऑटोमेटिक हो जाएगा. डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी. जस्ट रिलैक्स, चिल. आपको हाथ वहां लोअर करने की जरूरत नहीं है. रिलैक्स हो जाइए. फर्स्ट प्रेयर कर लेते हैं. Put your hands on the heart chakra in Namaste Mudra, on your heart chakra. Very good. Now raise your hands on the, as high as possible above your crown, like for we do Aratic invocation. Repeat after me. Repeat. To the Supreme God, to the Divine Father, to the Divine Mother. Kindly repeat after me. To the Supreme God, Divine Father, Divine Mother. Thank you for your priceless blessings. Thank you. Thank you for the blessings of divine light, divine love, divine guidance, divine love and mercy, inner healing, physical healing, inner strength to continue with spiritual practice, material and financial prosperity, abundance and success, peace and illumination. Thank you. Slightly lower. To our beloved teacher, Grandmaster Joa Coxswain, Lord Mahaguruji Mailing, all the great ones, all the holy gurus, holy masters, all the saints, archangels, holy angels, spiritual helpers, and spiritual elders. We thank you for your priceless blessings. Hands on the crown, with lots of gratitude. Ajna, with lots of respect. Heart, with lots of love. I thank you. Silently repeat, I am not the body. I am not the emotions. I am not the thoughts. I am not the mind. The mind is only a subtle instrument of the soul. I am the soul. I am a spiritual being of divine intelligence, divine love, divine power. I am connected and one with my higher soul. I am connected and one with the divine spark. I am a child of God. I am connected with God, one with God, one with all. I am the soul.
Slowly and gently open your eyes. Now please scan energy of divine intelligence in me, divine intelligence, divine love in me, divine power in me. So you scan for yourself. आप अपने लिए स्कैन करो, आपके खुद के अंदर दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम और दिव्य शक्ति की ऊर्जा कितनी है. स्कैन फॉर इट. Okay. Now, obviously, you all must have experienced that it has increased. Yes or no? But most important is what? You must have observed that now it is same. It's equivalent. Balance means balance. तीनों balance हो चुके हैं. Have you experienced this? Light, love, and power. Three become balanced. Okay. Question: Why? Why? Because Master said, when you do Aratic invocation, you bring down all these three energies. जब हम Aratic invocation करते हैं, भगवान को आह्वान करते हैं, to the Supreme God, Divine Father, Mother, भगवान से वो energy download करते हैं. You know, so thank you for the blessings of divine light, divine love, divine guidance, divine help and mercy, inner healing, physical healing, inner strength to continue with spiritual practice, material and financial prosperity, abundance and success, peace and illumination. We ask everything. So अराटिक इन्वोकेशन में हम सभी चीजें मांगते हैं. दिव्य ज्ञान, प्रेम, शक्ति, सहायता, मार्गदर्शन, संपत्ति, सफलता, समृद्धि, एकात्मता, शांति, ये सब हम आह्वान करते हैं. हम वो डाउनलोड करते हैं भगवान से. वी डाउनलोड दोज एनर्जीज फ्रॉम गॉड. नाउ अगेन, गॉड इज कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री एनर्जीज. इट्स लाइक मीन्स one energy, and there are three energies. There are three, you can say, sub energies. In Hinduism we call Lord Brahma, Lord Shiva, Lord Vishnu. भगवान एक निरंतर निराकार ऊर्जा है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसको तीन विशेषण उसके कि भगवान दिव्य, भगवान सर्वज्ञानी है, भगवान सर्वव्यापी है, भगवान सर्वशक्तिशाली है. गॉड इज ओमनिशियंट, ऑल इंटेलिजेंट, सर्वज्ञानी. गॉड इज omniprovident, सर्वव्यापी, सर्वत्र, and that is omnipresent also. And God is omnipotent, सर्वशक्तिशाली. God is omniscient, that is Lord Brahma. Omniprovident or omnipresent, that is Lord Vishnu. And omnipotent, सर्वशक्तिशाली, that is Lord Shiva. So Lord Brahma, Shiva, Vishnu, three energies is. So we download these energies in our system. हम ये तीनों एनर्जी हमारे अंदर में डाउनलोड करते हैं. ओके, डिवाइन लाइट, लव एंड पावर. नाउ वी ऑल नो वी एज अ सोल आल्सो आर हैविंग दिस एनर्जीज. एज अ सोल हमारे अंदर भी वो तीन ऊर्जा है, डिवाइन लाइट, डिवाइन लव, डिवाइन पावर. व्हाई? बिकॉज वी हैव ऑल कम फ्रॉम गॉड. हम सब भगवान से आए हुए हैं. राइट और नॉट? हमारे माँ बाप ने या हमने अपने बच्चों को शरीर प्रोवाइड किया है. हमने सोल को क्रिएट नहीं किया. वी हैव नॉट क्रिएटेड द सोल ऑफ आवर चिल्ड्रन और नाइदर आवर पेरेंट्स क्रिएटेड द सोल ऑफ आवर्स. यस और नो? ना तो हमारे माँ बाप ने, ना तो हमने हमारे बच्चों के सोल को क्रिएट किया है. भगवान ने सोल को क्रिएट किया. सो फॉर द सोल टू इनकारनेट ऑन द अर्थ, आत्मा को जीवात्मा बनने के लिए, जीव धारण करने के लिए शरीर चाहिए था और पृथ्वी पर आना था आत्मा को. इसीलिए माँ बाप ने वो मटेरियल प्रोवाइड किया जिससे वो शरीर बनता है. सो पेरेंट्स प्रोवाइडेड द मटेरियल required to create the body and the soul occupied that body. Yes or no? So we all have three energies: light, love and power, ज्ञान, प्रेम, शक्ति. And purpose of the soul is to develop these three qualities in the whole incarnation. हमारा पर्पस क्या है? हमें दिव्य ज्ञान, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति, दिव्य लॉर्ड ब्रह्मा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड शिवा एनर्जी पूरे इनकारनेशन में डेवलप करना है. एंड टिल वी हैव अ यूनियन विद द हायर सोल. Our union with the higher soul will become when light, love, power, three qualities. Remember, higher soul is pure, not perfect. To bring perfection, we incarnate on the earth. सोल प्योर है, परफेक्ट नहीं है. परफेक्शन हासिल करने के लिए हमने पृथ्वी पर जन्म लिया. एंड वी
deal with the people. So by dealing with the people, by getting the knowledge, by doing business or by doing job or living in the family, whatever role we have, we develop these three qualities. हमारा चाहे कोई भी रोल हो हमारे जीवन में, चाहे हम फैमिली के साथ रह के आगे बढ़े, चाहे हम जॉब करें, चाहे हम बिजनेस करें, चाहे हम साइंटिस्ट बने, चाहे हम लॉयर बने, चाहे हम आर्किटेक्ट बने, चाहे हम कुछ भी बने, कोई भी प्रकार का नॉलेज ले, कोई भी प्रकार की जॉब करे या बिजनेस करे, ये सब में हमारे अंदर की तीन क्वालिटीज डेवलप होने वाली है, लाइट, ज्ञान, लव, प्रेम एंड शक्ति. यस और नो? Yes. Okay. So, what is the meaning? So, Master said, see, when you are supposed to develop light, love, and power, that means there will be some opposite energy coming to you. Or there is for example, how knowledgeable you are, or how much, you can say, how much you acquired, or you say, how much you have studied, how much you have studied well, it will be proved when the college or university will take your exam. Yes or no? हमने कितना नॉलेज हासिल किया है, कितना समझा है, कितनी पढ़ाई की है, उसका प्रमाण क्या होगा कि जब हमारी एग्जाम होगी, वो हमने जो रजिस्टर किया उसमें लिखेंगे, तो प्रमाण है कि या I gain that knowledge. Yes or no? You have done pranic healing. When you do healing, actual healing, that time it proves, yeah, I have learned pranic healing. All have learned pranic healing. Who is applying pranic healing techniques? Those who apply the technique will get the result. So the thing is that we all will go through certain things in our life. So that will develop three qualities: light, love, and power. तीनों qualities develop होगी, right? Fantastic. But master gave a technique. Hey, dear, sometime certain energies of past incarnation is stored in you. तुम्हारे अंदर पास्ट इनकारनेशन की कुछ आदतों की एनर्जी है जो तुम्हें रोकेगी. So sometimes your laziness will also stop your progress to achieve that knowledge. Your laziness may also stop your progress to initiate the things. Your laziness may also stop you to put yourself in that action mode. Maybe lack of understanding, master said, you may have a fear to do something. हो सकता है कि तुम्हारे अंदर कुछ प्रकार का डर हो जिसकी वजह से तुम जाओगे ही नहीं. एक डर है स्विमिंग पूल में जाने का. There is a fear of going in the swimming pool. So the person has all the qualities, everything, but cannot become a champion. और वो चैंपियन नहीं बन सकता. Why? Because there is a fear stopping him to go to swimming pool. Are you getting my point? So there is a lack of certain energies जो हमें रोक रही है. Sometimes we plan but cannot execute. Why? Something is stopping us. कुछ ना कुछ हमें कल करेंगे, बाद में करेंगे, थोड़ा ये होगा, नहीं. Sometimes the overthinking can also paralyze our thinking ability. So overthinking में हम करेंगे ही नहीं, एक्शन में नहीं लाएंगे. So ajna, overthinking, ajna throat, overthinking. Then person can, no, I don't think it will work. जाने दो. So what is stopping us? Our fear, our fear of rejection. So there is no laziness, there is a fear of rejection. So sometimes हमारे खुद का डर, खुद का आत्मविश्वास कमजोर क्यों पड़ता है? आजू बाजू से हमने देखा, लोगों को हमने देखा, we had seen people, they couldn't succeed. So अच्छा, रिट्रीट में मत जाना, मजा नहीं आता है. अच्छा, क्लास किया मैंने पर वो इंटेंसिव प्रैक्टिस में उतना नहीं, वो भिंडी मसाला बराबर नहीं था. इधर रिट्रीट में वो खाने का स्टॉल पे मैंने देखा, ऊपर ये लोग खाने में, ये लोग. सो समबडी एक्सपीरियंस, रिट्रीट में खाना बराबर नहीं था, रिट्रीट में जाना नहीं चाहिए, वो बराबर नहीं है, वो क्लास में करना नहीं चाहिए. मैंने सुना इसका क्लास बराबर नहीं है, उधर जाना नहीं चाहिए. सो अगेन certain things are stopping us to do that.
कहीं ना कहीं वो barriers in the mind is stopping to get the knowledge. Barrier in the mind to take action. Action ही नहीं लिया. So what is the meaning? Master said there is a lack of intelligence. There is a lack of love. There is a lack of generosity. So first of all, we need to understand these things, that, where these energies are installed in our system. So my dear friend, you also need to remember this. Those who remembers, thank you very much. But if you don't remember, this is a reminder. Okay, this is the reminder that every Arhatic yogis should know that they are supposed to develop three qualities, and these energies are installed in our system where and which virtues are connected to those qualities. वो कहां पर इंस्टॉल है और वो कौन से वर्च्यू से कनेक्टेड है. So my dear friend, our divine intelligence is connected to crown chakra, forehead chakra, ajna and throat chakra. That is divine intelligence, Lord Brahma quality. Our heart chakra and solar plexus. Okay, now which virtue connected to divine intelligence? Divine intelligence, matured honesty and non-lying. Matured honesty and non-lying. Okay, that is honesty and non-lying. Then heart and solar plexus chakra is connected to Lord Vishnu quality, divine love. Lord Vishnu quality, God is omnipresent. Which virtue? Which virtue? Not spleen, heart and solar. Which virtue? Loving kindness and non-injury, generosity and non-stealing. Next, divine power, navel, sex, basic, spleen, Megman, all. That is divine power. Navel chakra, Megman chakra, sex chakra, basic chakra, spleen, back spleen, connected to divine power, Shiva quality, these chakras. So light, love and power. So we are the soul operating the entire body. Light, love and power. Clear? Okay. Next. Now, so we are supposed to develop these three qualities. And now, Master said, you have a technique called blue triangle to disintegrate all the past energies, all the old ideas and thought forms. Why? Master said, energy can be transformed. Energy को transform किया जा सकता है. Energy को मारा नहीं जा सकता. So every time we remove certain energies, we install that divine intelligence, divine love, divine power in us. जब हम हमारे सिस्टम से वो नेगेटिव एनर्जी, थॉट्स, इमोशंस की एनर्जी, उस वर्च्यू से कनेक्टेड एनर्जी को निकालेंगे, तब हमारे अंदर वो प्लस होता जाएगा, डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन लव, डिवाइन पावर. क्लियर? सो फॉर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से लविंग काइंडनेस एंड नॉन इंजरी, प्रेम भाव, अहिंसा. Okay, so and generosity and non-stealing. What do you think? What problem people will face if they do not follow this virtue? Anyone do not follow the virtue properly, loving kindness and non-injury, generosity and non-stealing. वो अगर follow नहीं करेगा व्यक्ति, तो उसको क्या problem होगा? So let's go one by one. Loving kindness towards self first, So injury in thoughts, injury in emotions, injury in action. So what will happen to the body? Self-injury में क्या होगा? Body has a problem. Mental, emotional, etheric, physical body has a problem. Pain, discomfort, any problem in the body. Okay, now same. दूसरा, injuriousness towards others, mental level, emotional level, etheric level, physical level. किसी के प्रति इंजरी, हिंसा की हमने, मानसिक लेवल पर, भावनात्मक लेवल पर, एनर्जी लेवल, शारीरिक लेवल पर. So क्या, what would be the consequences? What you plant, you harvest. Master said, yes. So what will happen? So we have a mental, psychological problem. We have an emotional disturbance problem in our house and our relationship. Some में problem होगा. So you are emotionally disturbed. Physically, injury, so pain and discomfort and all. So my dear friend, if you do not follow loving kindness and non-injury, there is a possibility that there is a problem, physical and psychological problem with self. As simple as that. Clear? Okay. That means there's a lack of love.
देयर इज अ लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. क्यों हुआ? हमारा प्यार क्यों कम पड़ा? लैक ऑफ एडेप्टेबिलिटी. हमने एडेप्ट नहीं किया, हम फ्लेक्सिबल नहीं बने, हम किसी की बातों से सहमत नहीं थे, इसलिए हमारा आर्ग्यूमेंट हो गया, गुस्सा हो गया, फ्रस्ट्रेट हो गए. Why people get angry, agitated, frustrated? Because of lack of adaptability, lack of flexibility. Because person think what I say is only the right thing. मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है. So our lack of adaptability, lack of flexibility, lack of sacrifice, lack of understanding leads to injuriousness. What about if somebody doesn't follow generosity and non-stealing property? Master said, mental level generosity, sharing ideas, knowledge with people, emotional level generosity, giving emotional support, motivating, inspiring. You know, मेंटल लेवल पर जनरसिटी क्या होगा? आइडिया शेयर करना, स्किल शेयर करना, नॉलेज शेयर करना. इमोशनल लेवल पर किसी का उत्साह बढ़ाना, किसी को मोटिवेट करना, किसी को सपोर्ट करना इमोशनली, उनको होगा, उनको हौसला बढ़ाना. फिजिकल लेवल चैरिटी करना, हेल्प करना, फिजिकल हेल्प करना, हीलिंग करना, दान धर्म करना, फूड डोनेशन, वॉट एवर. सो दिस इज जनरॉसिटी, राइट? ओके. स्टीलिंग. सो what master said, if you do, if you do not be, now let's talk about this. maybe just think like this, कि हम चोरी नहीं करते हैं, हम चोरी नहीं करते हैं, बट मे बी देयर इज अ लैक ऑफ जनरॉसिटी. कि आज मैंने चूज किया कि नहीं, मैं ये टेक्निक सबको नहीं बांटूंगा. लाइक वी मे थिंक, नहीं, नो, आई विल नॉट शेयर माय आइडियाज विद माय कलीग, आई विल नॉट शेयर माय आइडियाज विद सो एंड सो पर्सन. व्हाई शुड आई डू दैट? ही इज नॉट माय फेवरेट. ये मेरा फेवरेट नहीं है, ये मेरा नेबर नहीं है, ये मेरा वो नहीं है, ये मेरा स्टूडेंट थोड़ी है, मैं क्यों करूँ? लैक ऑफ जनरosity. Then mental level, emotional level, not supporting, knowing that somebody is in trouble. नहीं, एक बार भुगतने दो उनको तो पता चलेगा. So there is a lack of support given. Knowing that the person knows कि उसको emotional support चाहिए, नहीं दिया, because we choose that इसको support करूंगा, इसको नहीं करूंगा. We have chosen that. To become an arhat, we cannot have these choices. Can we have choices? If you want to become an aryan, मतलब अरियन बनने के लिए गुरु जी ने लिखा है कि खाली फैमिली को, मैं इसमें भी आपके चाहिए थे लोगों को, सबको नहीं. नो. Okay, lack of now sometime through some experiences of people I am sharing with you, some student was saying, sir, बहुत पैसा है अपना फाउंडेशन के पास. ऐसे तो उधर दूसरी जगह डोनेशन करते हैं ना. So I remember this, very well. So, and I remember this also well when Master said this. Master said, where you order your food from this restaurant, where you will pay the bill, this restaurant. If you learn and if you get the knowledge from Prani Killing School, are you going to donate to other schools? If you get electricity by Adani, are you going to pay to Mukesh Bhai? No. So person also have a barrier. Guruji ko, Guruji, our job is to give it to Guruji. Lack of generosity. हमने वो शेयर नहीं किया, इसलिए हमारा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है. Think about it, my dear friend. It is not that हमारे अंदर weakness है. Sometimes our thinking has been contaminated. Our thinking has been polluted by people. For example, if you meet 5 people, those who are saying, erratic होगा, बहन क्या बताऊं, erratic होगा करने के बाद मेरा लाइफ खत्म हो गया. And I was listening. सोचो जब आप ऐसा कोई भी सुनते हो ना कि मेरा लाइफ खत्म हो गया, तो कभी कभी मेरे पाम मारने चक्कर में बहुत कुछ होता है, पर मैं फिर वो हाथ ठाकुर के ब्लेसिंग के लिए जाते हैं. ऐसा नहीं होता है. लाइफ खत्म हो गया. आई सेड, आर यू आउट ऑफ योर माइंड और व्हाट यू आर सेइंग? अराटी प्रैक्टिस है, तुम्हारा लाइफ खत्म हो गया. कैसे खत्म हुआ? You have not practiced your blue triangle. You have not done you have not done your exercise, breathing exercise, blue triangle, inner reflection, और फिर तुम मेडिटेशन करने बैठ गए, तो प्रॉब्लम होगा ही ना. गुरुजी ने बोला तुम्हारा अपने आप को प्रिपेयर करके बैठो, तुमने प्रिपेयर नहीं किया. Did you follow generosity? नहीं. Master said to offset your negative karma, you tithe. Did you tithe? हाँ सर, मैं हर महीने 500 रुपया करती हूँ. Are you earning only 5,000 rupees per month? No सर, वो तो ज्यादा है. तो where is that 10%? 10% का इनकम का डोनेशन किया है? नहीं किया है. 500 रुपया फिक्स कर दिया, तो
तो कमा तो ज्यादा रहे। आरआईटी को ना प्रॉब्लम, आरआईटी को जब जिस दिन मैंने कुंडली करती हूँ ना, मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा होता है। कुंडलिनी योगा करने से हस्बैंड से प्रॉब्लम क्या है? हस्बैंड को पता है सांप ऊपर आया आज? नहीं। द प्रॉब्लम इज दैट कि अंदर का जो है ना वो बाहर सरफेस पे आ गया, जो गुस्सा अंदर भरा था 3 दिन से, जो आपके अंदर भरा होगा वो बाहर आ सकता है। सो माय डियर फ्रेंड, इट्स अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लैक ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इन अ प्रॉपर वे। कहीं ना कहीं हमारी गलती है। आई रिमेंबर, ड्यू रिस्पेक्ट, आई मीन, वी ऑल नो श्रीराम। आप लोगों ने श्रीराम से क्लास किया होगा। सो श्रीराम ने गुरुजी को पूछा था, आई विल मेक इट शॉर्ट, मेक इट शॉर्ट। श्रीराम ने गुरुजी को पूछा होगा कि आई एम गोइंग टू दिस टेरिटरी बट इट्स नॉट हेल्पिंग, एंड बेसिकली ही वाज सेइंग द प्रॉब्लम्स दे वर फेसिंग टू स्प्रेड प्राणिक लिंक। सिंपल, एक सिंपल स्टोरी को शॉर्ट कर दे कि उन्होंने गुरुजी को बताया था कि मुझे ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा हूँ स्प्रेड करने के लिए। गुरुजी ने बोला ओके दैट्स योर प्रॉब्लम, दैट इज द प्रॉब्लम। सो ही वाज लाइक व्हाट इज दैट? Yeah, you have to tackle it, you have to take it out because of your own energy. You are attracting this, means you take it out from your system. You do blue triangle, you do kriya shakti, you do blessing, problem solved. He didn't say, okay, I will bless you, and you do blue triangle, you do arati practice, you do blessing, you do kriya shakti. Means the problem will go if you do this practice. Are you getting my point? So very important lesson. Always Guruji used to say, hey, everyone going to Guruji and say, Guruji, actually my co-trustee is doing this. Yeah, you bless. You bless. You know how to bless. Simple thing is, my dear friend, we need to remove these energies, fine, but we have to transform. Means we have to look for that, how many thoughts and emotions I am creating every time for that person. So there is a lack of all these things leads to problem. Yes or no? So if there is a stealing happening, then what problem person will face? Financial problem. Problem person will face, hurdles in the life. उसको hurdles सिखा देगा, उसको काम पूरा नहीं होगा, कोई जनरस नहीं बनेगा, कोई हेल्प नहीं करेगा. Simple, the person will not help. Why? Because we are not generous, people were not generous. Are you getting my point? So there is a lack of this. So sometimes we are doing it, but there is a lack of certain things. We are not getting this. Anything in our life, we are not attracting, that all this problem lies within us. Then the last one, moderation and non-excessiveness is constancy of aims and efforts and non-laziness. अपने लक्ष्य के प्रति लगातार प्रयत्न करना, आलस नहीं करना, संयम बरतना, अति नहीं करना. So Master said, if you don't follow this virtue, what will happen? You become super lazy. Then you are attracted towards food, sex, all rest, leisure, aram, jalsa. Then what will happen? Then after 1 year, when somebody goes on the stage and everybody is clapping, wow, and then we feel like, हमारे पास ऐसा होता तो मैं भी करता हूँ. अरे हमारे पास होता नहीं, उसके पास भी नहीं था, उसने भी बनाया. द पर्सन हैज क्रिएटेड. पर्सन, जब एक व्यक्ति जब एक व्यक्ति वो नवरात्रि में 9 दिन डांडिया रम, वो 9 दिन है ना ब्लू ट्रायंगल करके, ब्लेसिंग करके, क्रिया शक्ति करके वो काम कर रहा था. वो डांडिया नहीं खेल रहा था, इसलिए वो सक्सेस के लिए वन पॉइंटेडनेस चाहिए, तब जाके वो सक्सेस मिलता है. वी कैन नॉट expect that everyone will come in our life and एक लक्ष्मी मंत्र करेंगे 1,00,000 रुपया. इट इज ऑल डिल्यूजन कि मैंने लक्ष्मी जी का पाठ किया है तो लक्ष्मी जी हमारे घर आएंगे. डिल्यूजन. मास्टर प्लीज हेल्प, प्लीज हेल्प. एंड फिर इतने इमोशनल होके 108 बार शरणागति. सैल्यूटेशन टू द सुप्रीम बीइंग. मैंने 108 बार शरणागति किया, कुछ नहीं हुआ. मास्टर में रोते रोते शरणागति में रोता रोता एनर्जी में तुम्हें रोते रोते ही भेजेगा ना. तो तुम इतना टाइम क्या किया?
तुमको क्या लगा शॉर्टकट लगा 108 बार शरणागति किया मैं ब्लेसिंग देगा तो हो जाएगा काम. इट इज ऑल डिल्यूजन कि ये करेंगे तो नहीं होगा. अगर यही चीज होता ना तो गुरुजी ने अराटिको का प्रैक्टिस नहीं दिया होता. He would have just said that. You just do 108 Sharanagati, finish it off. You don't need to do anything. No, he said you do Arati Yoga. Even if you go to Arati Yoga level 1, 2, 3, 4, 5, he didn't say you only do this. Yeah, you do this practice. My dear friend, हमारे अंदर का लैक ऑफ जो एनर्जी है ना उसको निकालना बहुत जरूरी है थ्रू ब्लू ट्रायंगल. And it is a constant practice. It is not that 1 day practice, 2 days practice और intensive करके एक दिन में सब मसाला निकाल दिया. No. So there is a lack of love. So the moment we take it out, for example, when you have a problem, what we have to do? So master says some simple thing like this. Suppose you have a problem. Let's say somebody is not getting job. चलो मान लो एक जॉब नहीं मिल रहा है. एक सिंपल एग्जांपल पकड़ते हैं. ओके. सो व्हाट ब्लू ट्रायंगल द पर्सन कैन डू. क्या कर सकते हैं? Okay, let all kinds of negative thoughts, negative emotions, negative feelings, negative pattern and program within me, preventing me to get the right job with the right payment. Any kind of thoughts and emotion, any kind of my habits, my pattern, my program within me, which are not proper for doing the job in the company. So sometime कुछ व्यक्ति के विचार ही अलग है. कभी कभी वो थॉट कंपनी के साथ मैच नहीं करते, कंपनी के सीईओ के साथ मैच नहीं करते. समटाइम द प्लान ऑफ द एम्प्लॉय डजंट मैच with the CEO. Sometimes the employee has a pride. I know better than my boss. मेरा बॉस क्या दिमाग नहीं है, क्या करेगा क्या मालूम. And then you lose the job. Why? Because God said, okay, you find the better boss. If you keep criticizing, let's go and have the better boss. तुम्हें ऐसे भी प्रॉब्लम है ना. तो बॉस भी तो प्रेयर करता है. बॉस ने प्रेयर किया उधर, एम्प्लॉय ने क्या किया? एम्प्लॉय सेड माय बॉस इज क्रेजी गाय. सो बॉस उसको नहीं पता है. बॉस प्रेयर करता है, गॉड bless me with the right employee, those who are right for me in my life. Thank you boss, thank you God, thank you. बॉस ने वो प्रेयर किया, वो आउट. So sometime you are not. Let's take an example. You are not. You find difficulty in doing your Aratic yoga practice. आपको Aratic yoga practice करने में difficulty आ रही है. So take out all those thoughts and emotion. Any thoughts, emotion, pattern, regardless of my capacity of my brain to understand that these are my limitation. Sometimes certain habits may not allow us to do it. For example, how many of you have a habit? Due respect to all of you, I'm not here to pinch you. I'm here to understand that हम सब सुधर सकते हैं, including me. Okay, so मैं कोई born erratic का पैदा नहीं हुआ था. So I'm just sharing with you how many of you experience in your life that in the morning you have a habit of reading the newspaper, and then you thought that within 10 minutes I will complete reading the newspaper, and suddenly you realize 25 मिनट हो गया, अब नहीं होगा अभी. Now I cannot do my practice. 15 मिनट ऑफिस लेट हो जाएगा, ये लोग. How many of you experience? Yes, including me. So 2-3 days I realized that for reading newspaper I am getting late. Out. No newspaper. Let's do practice, then we'll read the newspaper. As simple as that. Leave it. Are you getting my point? So the problem is not laziness. Problem is, yes, I want to do meditation, but certain thing is not allowing me to do meditation properly, or time frame. Lack of that, management, time management. Are you getting my point? How many of you experience that? या आज मैं दोपहर में खाना खाऊंगा, फिर 1-2 घंटे के बाद मैं मेडिटेशन करूंगी, पर दोपहर में गुलाब जामुन ज्यादा हो गया और उसके बाद then you thought नहीं नहीं अभी मेडिटेशन नहीं होगा. Have you experienced? नहीं सर, गुलाब जामुन नहीं था, कोई और आइटम का. So again, there is no laziness. The problem is eating the food that is
एक्सेसिवनेस, वो तकलीफ दे रहा है कि हमारा फूड पे कंट्रोल नहीं था. तो अवर फूड हैबिट इज नॉट, बिकॉज अवर फूड हैबिट की वजह से हमें आलस आ रहा है. हमारे फूड हैबिट से हमारा वजन बढ़ गया है. अभी वजन बढ़ गया है तो हमारा एक्सरसाइज नहीं हो रहा है. एक्सरसाइज नहीं हो रहा है तो बिकॉज एक्सरसाइज इज नॉट हैपनिंग, सो पर्सन इज जस्ट डूइंग द मेडिटेशन. देन पर्सन इज फेसिंग कंजेशन इन द बॉडी. देन पर्सन गोज सिक, बीमार पड़ा. फिर अराटी योगा करने के बाद मेरा शरीर बीमार. अराटी योगा करने से बीमार नहीं पड़ा, वो एक्सरसाइज नहीं किया था मेडिटेशन के लिए, इसलिए बीमार. आफ्टर मेडिटेशन इतना जल्दी में था कि चिंटू आया, बेल बजाया तो चिंटू के लिए खाना गया, तो आफ्टर एक्सरसाइज वो नहीं किया मेडिटेशन के बाद. रिलीजिंग एक्सेस एनर्जी किया ही नहीं. और कुछ लोगों को ऐसा है कि मैं हर मेडिटेशन करूँ, रोज एक एक सुबह में ट्विनाइट कर लेती हूँ, दोपहर में सोल कर लेती हूँ, रात को लॉर्ड्स प्रेयर. ब्रह्मा विष्णु शिव आके बोलेगे बहन रहने दे, क्राउन चक्र फाटी जाते हैं तब. मतलब कि आप एक्सेस कर रहे हो, यू आर डूइंग एक्सेस, योर बॉडी कैन नॉट हैंडल इट. एंड आर यू आस्क योरसेल्फ, आर यू डूइंग हीलिंग? वेयर इज द आउटलेट? आउटलेट है क्या? Is there any outlet, or you are just putting the energy in? You have to ask yourself. Guruji also gave erratic yoga के लिए schedule क्या दिया है? Schedule, twin heart, soul, ध्यान, twin heart, soul, twin heart, soul, ध्यान, kundalini, twin heart, like that. One meditation. Did he say that ये सब करो? उसने बोला, उन्होंने twin heart के बाद नीचे soul करना, ये ध्यान के ऐसा बोला आपको? नहीं बोला. हराटिक योगा में कहीं पर नहीं बोला है कि इवनिंग साधना मॉर्निंग साधना करो. कहाँ पर लिखा है? उसमें नहीं लिखा है. इट इज सेड व्हेन यू आर इन द ग्रुप. तो उनको पता है कि ग्रुप में कभी कभी मिलेंगे तो ये करना आप. दैट्स व्हाई वी डू इन द रिट्रीट और सम टाइम एट सेंटर. बट इन डेली प्रैक्टिस उन्होंने नहीं बोला है. थिंक अबाउट इट. So sometimes our lack of understanding leads to certain problem. हमारे पास वर्ल्ड का बेस्ट टेक्नोलॉजी है, स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी, अंडरस्टैंडिंग एवरी डिटेलिंग हमारे पास है. अरे लोगों के पास वो कुंडलिनी एनर्जी, उसको नॉलेज नहीं है. हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है उस कुंडलिनी एनर्जी का, कि कुंडलिनी एनर्जी से क्या होता है, उसके सिंड्रोम क्या होते हैं. बाय द वे, टुमारो वी हैव अ सेशन ऑन हाउ टू प्रिपेयर आवरसेल्फ फॉर मेडिटेशन and Kundalini syndrome, both the thing. दोनों पे हम सेशन कल same time. Clear? Are you getting my point? So we have to transform those energies which are not within us. So let's do the practice. ब्लू ट्रायंगल है कि कबर्ड में रखा है ऊपर, तो निकालो.